So we have taken up the mechanism of SN1 and SN2 so far, and in SN1 or SN2, the stereochemistry was such that if you had, say, a chiral carbon, and this chiral compound subjected to SN1, you'll have what's called optical retention as well as optical inversion. Now, retention and inversion together would lead to racemization, which you know is not 100%, because inversion is more than retention. But you understand literally the term retention. Retention मतलब जैसा स्ट्रक्चर है वैसा रिटेन हो रहा है, इन्वर्सन मतलब उसका हो रहा है उल्टा, ये SN1 हो गया। SN2 में very specifically you are told that it will be a case of 100% optical inversion. I think I tell you the name as Walden inversion or umbrella inversion as well. All right. Now this time I'm going to talk about a very peculiar process involving an alcohol, a particular reagent, peculiar reagent called thionyl chloride, where you see that the alcohol formed, the chloride formed, I'm sorry. So in this case, it's retention plus inversion. Here it's inversion only. This will be a case of optical retention only, 100% retention. It's also supposed to be among the best methods of forming a halide, because using thionyl chloride with ROH along with HCl, the byproducts are HCl and sulfur dioxide, both of them being gaseous, would leave the system. It's also supposed to be the best way. Darden's method बोलते हैं, Darden's process. नाम है Darden's process. It's a very good method. It's the best way to prepare RCl. It's the best way to prepare RCl from ROH. See, when the byproducts are gaseous, there is no hassle of separating the products and byproducts. You getting me? बच्चे लोग हाँ ना बोलो। जब byproducts gaseous होता है या precipitate होता है, precipitate could be filtered out, a gaseous product will naturally leave the system. So it's supposed to be a very good method of preparing a halide from an alcohol using FOCl2 because the byproducts are gaseous. So that's one aspect of this process, which will be a very common question in school exam, board exam, regular exam, you would want to know this is a very good method of preparing halide from alcohol because byproducts are gaseous. Byproducts gaseous होने से separation का झमेला नहीं रहता है. What we are more interested in is the stereochemistry of the process. The stereochemistry of the process is 100% optical retention. So let's see what happens. I mean, this will become very cliche in due course. इसका लोन पेयर है, एस डबल बॉन्ड ओ पोलर है, ये लोन पेयर जाकर के यहाँ पर अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, ये Cl माइनस निकल जाएगा. मेरा बात समझ में आ रहा है? ये सीक्वेंस समझो, अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी.
ये लोन पेयर जाएगा, वो ऊपर जाएगा, वो नीचे आएगा, Cl माइनस जाएगा। और कभी भी ऑक्सीजन ऐसे किसी के साथ में बॉन्ड बनाएगा, 3 हाथ होगा, ऑक्सीजन पॉजिटिव होगा, टू गेट रिड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इट विल लूज H प्लस। यू आर गेटिंग मी? तो मैं एक स्टेप में ही दिखा देता हूं what's called the formation of minus Cl minus H plus will happen differently. What's called the formation of a chlorosulfide. It's called a chlorosulfide. It's called a chlorosulfide. क्लोरोसल्फाइड के पहले ना यहाँ पर अगर ऐसा OH होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, ये H प्लस निकल जाएगा, ये लोन पर यहाँ पर वापस आ जाएगा, 3 हाथ होता है, ऑक्सीजन पॉजिटिव होता है, 2 हाथ रहेगा, 2 पैर रहेगा, न्यूट्रल हो जाएगा। मैं एक स्टेप खा जा रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? Cl माइनस जाता हुआ दिख रहा है, Cl माइनस जाता हुआ दिख रहा है, ये ऑक्सीजन से डिस्प्लेस में बॉन्ड बनाता है, 3 हाथ होता है, पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ पे H प्लस निकलता है। मैं ये स्टेप हटा देता हूँ, मैं ये स्टेप एक साथ ही लिख देता हूँ। बच्चे लोग हाँ ना बोलो। तो आई एम राइटिंग फॉर द क्लोरोसल्फाइड राइट अवे, ठीक है? अब ये क्लोरोसल्फाइड में ये जो लोन पेयर होता है वो ऐसे अटैक करता है, ये उठ के यहां पर आ जाता है। मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हैपेंस इन द सेम स्टेप, मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हैपेंस इन द सेम स्टेप, making and breaking of bond happens in the same step, making and breaking of bond happens in the same step. So naturally there is no scope for it to get rearranged, or as I say, the chirality is retained, the chirality is retained. कार्बोकटाइन बनता नहीं है तो रेशमाइजेशन वाला कोई सीन नहीं है, और ये इसी पार्ट ऑफ का मॉलिक्यूल है, ये पीछे से घूम करके अटैक कर नहीं सकता, ये सुनो। तो कार्बोकटाइन बनता नहीं है, रेशमाइजेशन का कोई सीन नहीं है, it can't go behind the molecule and act like an SN2. Making and breaking of bond happens in the same step, making and breaking of bond happens in the same step. तो जहां से जाता है वहीं पर अटैक कर जाता है उसी स्टेप में। It's called SNI. I stands for internal. Some sources also call it intramolecular. Intramolecular. I is for internal. You can also call it intramolecular nucleophilic substitution. Intramolecular nucleophilic substitution. What would be the result? The result would be chirality would be retained. बच्चे लोग हाँ ना बोलो, ठीक है? बहुत बार किताब में ऐसा दिया रहता है, SOCl2 ऐसा बनाया रहता है, ये देखने में अच्छा लगता है, ऐसे HCl निकाल दिया, ठीक है, ROCO SOCl बना दिया, ऐसे बॉक्स बना के निकाल देता है। तुमको समझने में जैसी सुविधा हो, जनरली किताब में ऐसा लिखा रहता है, यू नो, मोर स्टूडेंट फ्रेंडली, HCl निकल गया, OSOCl बन गया। बट हमेशा से बॉक्स बॉक्स बना के थोड़ी सीखेंगे, यू नो। नाउ आर द डेज व्हेन वी वांट टू सी एवरीथिंग यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स, एंड एज आई टोल्ड यू इन ड्यू कोर्स दिस विल बिकम वेरी रूटीन। ये लोन पे यहाँ पर आया, ऊपर गया, नीचे गया, ये चला गया, Cl OSOCl क्लोरोसल्फाइड बनेगा। एक ही एग्जांपल पढ़ते हैं हम लोग SNI का, यही एग्जांपल घुमा फिरा करके बार बार एग्जाम में पूछता है। दिस इज अ केस ऑफ ऑप्टिकल रिटेंशन, इट्स अ केस ऑफ ऑप्टिकल रिटेंशन। Can rub it off? Can rub it off? Although, you know, I want to retain this portion for a while. And an interesting and extremely common, very, very common, you'll find it in almost every other source, is when you do the same, in a medium like pyridine, So thionyl chloride in pyridine, you know, pyridine is this compound. And when you take pyridine as the medium, when you take pyridine as the medium, you'll have something like this.
So when you have inversion, you'll call it an SN2 product. Yes or no? तो ये ना बहुत कॉमन हर एग्जाम में पूछने वाला मैकेनिज्म है SNI. The two general mechanisms where SN1, SN2 are most predominant. SNI का हम लोग एक ही एग्जाम्पल पढ़ेंगे, which will be alcohol with SOCl2 forming a halide, जहां पर रिटेंशन होगा. You understand retention here? जब कोई मीडियम नहीं दिया हुआ है बाय डिफॉल्ट अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. जब कोई मीडियम नहीं दिया हुआ है बाय डिफॉल्ट इट्स अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर. एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है ना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है ना कि Cl माइनस को, कैटायन को, एनायन को हाइड्रेट कर देता है, सॉल्वेट कर देता है. जब कोई मीडियम नहीं दिया, जब कोई मीडियम नहीं दिया, इसका मतलब है ये Cl माइनस एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में इट्स सॉल्वेटेड और हाइड्रेटेड. यू नो सॉल्वेशन, हाइड्रेशन. The negative or positive end of a polar solvent would, you know, keep a cation or anion stable. That's why a polar solute goes into a polar solvent, because the cation will find the negative end of water and an anion will find positive end of water around it. That's called hydration, solvation. Yes or no? अब pyridine में ये Cl माइनस, pyridine में ये Cl माइनस सॉल्वेट नहीं होता है, हाइड्रेट नहीं होता, तो क्या होता है? अगर वापस मैं SOCl2 में H+ निकाल दूं, Cl माइनस निकाल दूं, एंड इफ आई प्रपोज कि यहां पर क्लोरोसल्फाइड बन रहा है जैसे पहले बन रहा था, यहां पर क्लोरोसल्फाइड में तो Cl माइनस निकल रहा है, तो सॉल्वेटेड था, हाइड्रेटेड था, तो इंट्रामोलिकुलर अटैक हो रहा था. यहां पर ये Cl माइनस इज नॉट सॉल्वेटेड, दिस इज नॉट सॉल्वेटेड. At most, you can talk about this HCl reacting with pyridine. Which can act as a base, because you know यहाँ पे lone pair is not used. You know about pyridine, pyrrole, aromaticity. I have told about all of this. So maximum this lone pair can interact with HCl, and a book would speak about formation of what's called a pyridinium chloride. तो वो Cl माइनस इस फॉर्म में या pyridinium chloride का फॉर्म में, दोनों फॉर्म में ये Cl माइनस फ्री है, दोनों फॉर्म में ये Cl माइनस फ्री है. मेरा बात बहुत ध्यान से सुनो. Alcohol with SOCl2, what is step 1? Loss of HCl. Now that HCl is always H plus and Cl minus, but the Cl minus in the polar protic solvent like water will be solvated, and you will have an intramolecular internal SNI. That's the peculiarity of this process. You want optical retention, you can able to do that using SOCl2 as a medium. एक पॉपुलर वेरिएशन है, pyridine दे देगा, pyridine की जगह और कोई अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट होता तो भी ऐसा ही होता. ये Cl माइनस अगर सॉल्वेट नहीं होता है तो ये Cl माइनस आकर के पीछे से अटैक करेगा और ये SN2 जैसा होगा. देखो ये SN2 जैसा होगा कि नहीं होगा. और अगर ये SN2 जैसा होगा, अगर ये SN2 जैसा होगा, Cl माइनस आके पीछे से अटैक करेगा तो ऐसा ही बनेगा. फिर हाँ नहीं बोलते. So I think I'm not confusing you. It's exactly how you're going to remember reaction of alcohol with SOCl2 in general and in pyridine. I repeat, when it's not mentioned, by default the medium is a polar protic solvent like water, which will solvate the anion in absence of a polar protic solvent. एग्जैक्टली यही क्वेश्चन रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहता है, कोई वेरिएशन नहीं रहता. यही क्वेश्चन बार बार घुमा के पूछता है SOCl2, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज SOCl2 in pyridine. पांडे जी उठ जाइए.
आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी क्लोरोसल्फाइड और इंटरनल या इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और pyridine में क्या होता है, ये Cl- सॉल्वेट नहीं होता है, इसलिए SN2 होता है. These are facts which you'll want to know. Obviously, if the question is more conceptual, if the question is more intrusive, otherwise, like most of the times in chemistry, it's about नाम क्या है और उसका काम क्या है. नाम क्या है, SOCl2, काम क्या है, SNI. SOCl2 के साथ में pyridine मीडियम, SN2 इनवर्स. तो चलो हाँ ना बोलो. And obviously, all of this will make sense only if we're talking about a fissile projection or a carbon having 4 different drugs, and thereby chirality. This will be so very called as a case of chirality retained or chirality inverted. सी हमेशा ना इन्वर्सन और रिटेंशन को ना chirality के टर्म्स में बोलना चाहिए. ये हमेशा ऐसा लगता है कि अगर रिटेन होगा तो उसका ऑप्टिकल बिहेवियर सेम होगा, पर वो जरूरी नहीं है. ये भी ना एक इंटरेस्टिंग बात है कि मैं बोलता हूं कि ABCX अगर रिटेन होता है तो ABCY होता है. बट ये बात याद रखना कि हम लोग बाय रिटेंशन बोलते हैं कि द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द ग्रुप्स आर नॉट स्क्रैम्बल्ड. हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल रिटेंशन, पर ऑप्टिकल रिटेंशन का मतलब ये नहीं होता कि डेक्स्ट्रो हमेशा डेक्स्ट्रो रहेगा. दैट इज सब्जेक्ट टू अ लॉट ऑफ थिंग्स. In general, a dextro might remain dextro, livio might remain livio, but generally by optical retention, I mean chirality being retained. Similarly, by inversion, I mean that I would be getting a product which will be like having the relative orientation of the remaining groups as the enantiomer of the initial compound, and we call it optical inversion. But it's not always necessary that this will mean dextro becoming livio. It might happen more often than not. You're getting me? So retention and inversion are literally as chirality retained or inverted, which is generally a case of the optical behavior being retained and inverted respectively as well. Similarly, you have a wedge end dash form where I keep on saying you'll have a wetness like this, and if this is an OH represented by a wedge with SOCl2, and this is how you will want to write for the product. I'm so sorry. This is being retained, yes or no? And if it is SOCl2 in pyridine, if it is SOCl2 in pyridine, you will want to write this. बच्चे लोग हाँ ना बोलो, ठीक है. SOCl2 मतलब रिटेंशन हो रहा है, तो वेज का फॉर्म में ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा, नीचे वाला नीचे रहेगा. और SOCl2 in pyridine will be like case of SN2 इन्वर्ट हो जाएगा. तो अरे भाई देख लिया, ये सारा वीडियो देख लिया SN1 SN2, तेरे को समझ में आ रहा होगा कि SN1 में क्या होता था, SN2 में क्या होता है. And we'll want to move on.